Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. We were discussing residues of a function at some isolated singularity. इस लेक्चर में हम कॉची रेजिड्यूज थ्योरम को डिस्कस करेंगे. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा whenever z0 is isolated singularity of the function f, then we can have the Lorentz series expansion of the function, and in that expansion that coefficient b1 is said to be residue of the function at z0. Now to evaluate the residues is an important task, but the more important task is to evaluate contour integrals using the residues. Residues की हेल्प से we can directly evaluate contour integrals in complex analysis. तो contour integrals को evaluate करने में रेजिड्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यही कारण है कि रेजिड्यूज का डिस्कशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसी कड़ी में वी विल डिस्कस कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम इन दिस लेक्चर. कॉची रेजिड्यू थ्योरम ये बताता है कि अगर किसी फंक्शन के पास एट ए टाइम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज हो तो वो हमेशा आइसोलेटेड ही होती है और उन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स पर हम हमेशा रेजिड्यूज की बात कर सकते हैं. एंड द थ्योरम सेज दैट वी कैन इवैल्यूएट द इंटीग्रल कॉन्टूर इंटीग्रल स्पेसिफिकली बाय राइटिंग द समेशन ऑफ रेजिड्यूज ऑफ the residues of the function at various isolated singularities. Okay, so in this lecture we will study the theorem, then its proof, and we'll do an example to understand this theorem. Okay, so let us start this lecture by writing the statement of the theorem, that is Cauchy residue theorem. Okay, theorem, and this theorem is Cauchy's residue theorem. Okay, this theorem says let C be a simple closed contour described in the positive sense if a function f is analytic inside and on C except for a finite number of singular points that is z case, and k could be 1, 2 and any finite number, and inside C, then we have the following result, that is integration along C of the function fz dz can be given by 2 pi I at a time summation k running from 1 to n, and then residue of the function fz at z equal to zk. Okay, so this is the statement of this theorem, right? अब इसके अंदर कहने का क्या सेंस है? लेट अस सी दैट. सपोज दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज आवर रियल एक्सिस, एंड से दिस इज द contour. Okay, this is some contour and it is positively oriented, so this is our curve C. Now suppose we are having some points. Let me draw some circle first. So this is one circle, this is another circle, and so on. This is the another circle. Okay, and we are having this point is z1, this point is z2, and so on. We are having this point is zn. Okay, हमने क्या किया, हम ऐसा कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके अंदर z1, z2, zn इस तरीके की सिंगुलरिटीज हैं. सिंगुलरिटीज है क्योंकि हम इसको दूसरी सिंगुलरिटीज से आइसोलेट कर पा रहे हैं. इसका मतलब ये सभी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं. अब इन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमने क्या किया,
ऐसे सर्कल्स बना रहे हैं विच आर हैविंग दी सेम ओरिएंटेशन इज द आउटर सर्कल। ओके, आपको अगर याद हो ऐसा कुछ सेटिंग हमने कॉची गॉर्से थ्योरम में देखा था, जहां पर इस तरीके के फंक्शन, इस तरीके के पॉइंट्स थे जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं था और उस वजह से हमें एक मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन मिल रहा था। अब मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन को हमने कैसे डिस्कस किया था, हमने इनको एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर दिया था और फिर हमने दो कॉन्टूर्स बनाए थे स्पेसिफिकली, जो कि एक इसके अंदर कौन से पॉइंट्स आ रहे थे, एक तो वो पॉइंट जो कि इस ग्रीन सर्कल, इस ग्रीन कर्व के अंदर है, और वो सारे पॉइंट जो इन ब्लू पॉइंट से बाहर है, राइट। तो बेसिकली हम इन ब्लू और ग्रीन जो कंटूर है उनके बीच के सारे पॉइंट्स को हम कंसिडर करने वाले हैं, राइट। अब उन पॉइंट्स पर क्योंकि हम इन ब्लू सर्कल्स के बाहर के पॉइंट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि ये जो रेड डॉट है वो हमारे इस ब्लू डॉट से एक्सक्लूड हो जाए, और जब एक्सक्लूड होगा इसका मतलब अब हम वो सारे पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहां पर फंक्शन एनालिटिक है। And the moment we are having the analyticity at some point and non-analyticity at some point, then we can think about Laurent series and hence the residue. Okay, तो रेजिड्यू और लॉरेंट सीरीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हमें पता है लॉरेंट सीरीज को डिस्कस करने के लिए वी required the analyticity of a function and same time non-analyticity of that function, right? अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू अप्लाई दी Cauchy-Gaussian theorem, okay, and we will have our statement. So let us try to prove this, and obviously this particular diagram will be part of our proof. Okay, I am writing that let the points zk, where k is equal to 1, 2 and n be centers of positively oriented circles ck, okay, which are interior to the curve C, and you can see are so small that no two of them have points in common. That means they are isolated. Okay, now this circle, you can see the circles ck together with simple closed contour C, with simple closed contour C form the boundary of a closed region throughout which f is analytic, right, and whose interior is a multiply connected domain. This is the discussion from Cauchy-Gaussian theorem. Okay, that's why I'm writing directly, because वहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया ही था. Domain consisting of the points inside the curve C and exterior to each C के. ठीक है, जो ब्लू सर्कल उनके बाहर
और ग्रीन जो कंटूर है उसके अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। Hence, according to the Cauchy-Gauss theorem, to such domains we can have that integration along C of fz dz minus summation k running from 1 to n integration along ck of fz dz will be equals to 0. This is from the Cauchy-Gauss theorem, right? अभी हमें पता है कि हर एक जो z के है, this z1 is an isolated singularity, this is z2, this z1 all are isolated singularity. अगर ये isolated singularity है तब हम इस तरीके के contour integral को आसानी से evaluate कर सकते हैं. But let me call this is number 1, okay? But from the discussion of residue, we know that integration along ck of fz dz is nothing but the 2 pi iota time residue of fz at z equal to zk, okay, for k is equal to 1, 2 and so on n, right? This is say equation number 2. Now if we use equation number 2 into 1, then we will have the Cauchy residues theorem, okay? So now using 2 into 1, we have that integration along c of fz dz minus, I'm writing directly this as 2 pi iota summation k running from 1 to n, then residues of fz at z equal to zk will be equals to 0, right? And this will implies that integration along c of fz dz is nothing but 2 pi iota summation k running from 1 to n, then residues of fz z equal to zk, okay? So this is a very powerful theorem in the discussion of residue, okay?